It was a different story that I did not. It was a different story that I did not join GSI. मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, तो आप लोगों को देख के मुझे अपना वो टाइम याद आ रहा है जब मैं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था, और तब इस तरह का सिस्टम नहीं होता था कि आपको कोई आप इस तरह का, हमारा मीडिया भी नहीं था, इतना सारा ऑप्शंस भी नहीं थे. सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कॉन्फिडेंस. और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप सब चीजें जानते हो. वो कॉन्फिडेंस मेंटल कॉन्फिडेंस आएगा, एंड that would be only possible when you understand your subject, you understand you understand what you have to say. और जो 2-3 चीजें इंटरव्यू से पहले जो हमें करनी है, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें वहां जाके सिर्फ ये कन्वे करना है कि आपको इस जॉब के लिए मेरे से बेटर कैंडिडेट नहीं मिल सकता. Somehow you have to convince the interviewer or the board on this point कि जो जॉब के रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब मैं फुलफिल करता हूँ. जो आपको जो आपकी जिस तरह का व्यक्ति आपको चाहिए वो मैं हूँ. So one important thing is to update ourselves about the organization. बहुत बार क्या होता है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हैं उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं होती, और वहीं सवाल पूछ लिया कि आप जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन आप एप्लीकेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है. तो एक आजकल ये बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि सबकी वेबसाइट्स हैं, पूरी डिटेल्स वेबसाइट में अवेलेबल है, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशन क्या उसके वो हैं, और उसमें हर एक जब आप उसकी वेबसाइट देखते हैं तो उसमें शुरू का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसमें कुछ पंच लाइन होती है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर दिस और व्हाटएवर इट इज. और तो वो पंच लाइन जो है वो जरूर याद रखिएगा, और उस पंच लाइन को रिलेट कीजिए अपने उसमें प्रेजेंटेशन में. जब आप बात कर रहे हैं तो आप ये उसको रेफर कीजिए कहीं. तो एक ये नजर आना चाहिए कि आप इस इंटरव्यू के लिए गंभीरता से तैयारी करके आए हैं. और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो सब्जेक्ट के बाहर से शुरू करते हैं हम लोग इंटरव्यू, हमेशा पहले सब्जेक्ट के बाहर की चीजों से होता है, फिर हम सब्जेक्ट तक आते हैं. उस पर्टिकुलर दिन या उसके इन्हीं पिछले 2-4-5 दिनों में हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई है क्या, उसकी जानकारी बहुत जरूरी है. और उसके बारे में केवल जानकारी नहीं, उसके बारे में डिटेल्स जो है एज ए जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट आप उसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है वो होना चाहिए. और तीसरा ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो रोल है वो क्या है. If you are applying for a geologist, what is the role of geologist in that particular organization, and how you present yourself to be fit for that particular role. कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि आप हमारे लिए आप इस इंस्टीट्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं. What are your skills? So you have to convey that the skills that are required for this job, I possess them. और ये खाली बोलने से नहीं होगा काम, ये उनको आप उनको कन्विंस करना, उनको इनडायरेक्टली कन्विंस करना पड़ता है. आप खाली ये कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मैं सब कर सकता हूँ. उसकी बजाय आप अगर उसको रेफरेंस देके करें कि फील्ड में जब हम गए थे तो मैंने सारे मेजरमेंट्स, डिप स्ट्राइक के मेजरमेंट्स लिए, और हमने वहाँ पे सैंडस्टोन के मेजरमेंट्स लिए, ये हमने ये किया, और उसमें ये हमारे फाइंडिंग्स थे, बजाय ये कहने के कि मुझे डिप स्ट्राइक लेना आता है. Then when you appear for the board, तो यूजुअली आप मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कितनी बात आप पहले जानते हैं, कितनी बातें हुई हैं. तो प्रेजेंटेशन अपने आप का सबसे इंपॉर्टेंट होता है. हालांकि उसका रोल सिर्फ इतना ही होता है कि आपकी शुरुआती जो स्टेप्स होते हैं वहीं तक होता है. जब आप बात करने लगते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन से ध्यान हट जाता है. आपकी प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है. तो ओकेजन के हिसाब से आपका ड्रेसिंग होनी चाहिए. बहुत ज्यादा ऑकवर्ड भी नहीं हो, बहुत ज्यादा फॉर्मल भी नहीं हो, और बहुत ज्यादा इनफॉर्मल भी नहीं हो. 3 पीस सूट जब पहन के जाएंगे वो भी ठीक नहीं है, और शॉर्ट्स पहन के जाएंगे वो भी ठीक नहीं है. आप नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड अटायर है वहाँ जो वो होना चाहिए. आप कंफर्टेबली जाएं, आराम से जाएं,
और एक, जब भी आप किसी, जब भी बात कोई, जब आप बात करते हैं तो बोर्ड में कई लोग होते हैं नॉर्मली, तो लेकिन प्रश्न हमेशा जब बातचीत हमेशा एक बार में एक व्यक्ति से ही बातचीत होती है। तो जब आप जवाब दें तो जवाब उनको उनके रूबरू होकर दें जिन्होंने पूछा है, लेकिन बाकी लोगों को भी ग्लांस करते रहें। और अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। हमें सबको सब कुछ नहीं आता, वो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी सब कुछ नहीं आता और हमें भी सब कुछ नहीं आता। अब दिक्कत ये है कि हो सकता है कि मुझे 100 में से 97 आते हैं और 3 नहीं आते। वही 3 अगर पूछ लिए जाए तो जो जो एनालिसिस होगा, जो जो इंटरप्रिटेशन होगा, ये होगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जो हमें आता है वहां तक उस दिशा में इंटरव्यू को ले जाया जाए। और और इंटरव्यू बोर्ड का भी प्रयास ये रहता है कि उनको उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं कि आपको सब कुछ आता है। महत्वपूर्ण ये है कि आपको जो आता है वो कैसे आता है, रटा हुआ है या समझा हुआ है। तो जब आप जवाब दें तो ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी अनपढ़ आदमी से बात कर रहे हैं, किसी अज्ञानी से बात कर रहे हैं जिसको कुछ नहीं आता और आप उसको समझा रहे हैं, इसका उत्तर दें। ये भूल जाइए कि आपके सामने जो बैठे हुए एक्सपर्ट बैठे हैं। आप ये मान के चलिए कि इनको कुछ नहीं आता और मुझे इनको समझाना है। डिप के बारे में बात हो रही है तो डिप के बारे में वैसी समझाना है जैसे आप किसी लेमैन को बताते हैं। और एक जो हमारी आदत आजकल खराब हो गई है ये मोबाइल से और इन सब चीजों से, जिसको कहते हैं SMS लैंग्वेज, शॉर्टकट्स की जो बात करते हैं, मोनोसिलेबस में बात करते हैं, एब्रिविएशंस में बात करते हैं, वो इंटरव्यू में नेगेटिव हो जाता है। आपका सेंटेंस पूरा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और टर्म्स जो हैं वो कंप्लीट टर्म्स, उसके टर्म्स जो आप दे रहे हैं उनमें एब्रिविएशंस नहीं यूज करें, पूरा नाम लें। और जो सवाल जो आपको आता है जिसका आप जवाब दे रहे हैं, उससे जो सेकेंडरी सवाल उससे रिलेटेड चीजें उनके बारे में हमारी जानकारी क्लियर होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछ लिया कि किस फलानी किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटिग्राफी यूनिट की एज क्या है। आपने बता दिया कि उसकी एज 1550 मिलियन ईयर्स है। तो नेचुरली उसके बाद दूसरा सवाल आएगा, ये सवाल यहाँ पे, ये प्रश्न यहाँ पे खत्म नहीं होगा। दूसरा सवाल आएगा कि ये किस मेथड से निकाली गई है, आपको मेथड मालूम होना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि मेथड जो है, इसके अलावा भी कोई मेथड है कि जिससे जिससे ये इसकी एज निकाली जा सकती है, आपको उसका जवाब भी आना चाहिए। चौथा सवाल ये आ सकता है कि क्या ये तरीका सही है एज निकालने का, या इस तरह की चट्टानों के लिए या इस तरह के सिस्टम के लिए, उसका जवाब हमें आना चाहिए। पांचवा ये है कि और क्या तरीका हो सकता है। तो ये सब, अगर ये सब चीज जो जो वहां पे what what the board is trying to assess is not your knowledge, is your understanding. नॉलेज तो वो अपना ट्रेनिंग करवा देंगे, उनको उसको चिंता नहीं है कि आप बहुत जियोलॉजी कितनी जानते हैं, वो उनकी समस्या नहीं है। वो जियोलॉजी तो आपको सिखा देंगे। स्पेशली जियोलॉजी ऑफ इंडिया में इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। सो दे आर नॉट रियली बॉदर्ड कि हाउ मच जियोलॉजी यू नो, they are only evaluating your understanding of the subject and your interest in the subject and your willingness to learn and deliver. So that's on these points we have to convince the board that this is what I possess all these qualities and I am suitable. And और एक और चीज है कि आपके उससे सारी बातचीत से लगना चाहिए कि आप इस इवेंट को गंभीरता से ले रहे हैं और आप इसकी तैयारी करके आए हैं। कई बार पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उससे जवाब देना, क्योंकि आपको मालूम है जैसे ही आपने जवाब दिया अगला सवाल उसी पे आएगा। तो आपको बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप अगर कहते हैं कि नहीं मेरे सारे सब्जेक्ट फेवरेट हैं तो भी ठीक नहीं लगता। आप ये बता सकते हैं कि वैसे सारे सब्जेक्ट, जियोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट हैं। तो आइसोलेशन में कहना मुश्किल, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इन एक सब्जेक्ट की जगह 2-3 बोल दीजिए तो कि आप थोड़ा आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रह जाती है। Sometimes the question you don't know the answer. So there are two options now. Either you can say sorry I don't know sir, और दूसरा ऑप्शन ये कि आप एक तुक्का लगा सकते हैं। आप इसके बारे में
एक वो बता सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, then in that case you should be clear. Okay, I'm not very sure. Yeah, I did read this chapter, but it's long time. Probably this is, तो यहाँ पे आप जब probably बोल देते तो आप सेफ हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो उनको विषय के बारे में बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो हमें जो नहीं आता उसको स्वीकार कर लें कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो एग्जैक्टली दिस आंसर, बट आप उसको एक ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं। उन्होंने पूछा कि ये हॉर्नबैंड की कंपोजिशन बताइए। आप कैसे, हॉर्नबैंड की तो मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हॉर्नबैंड, बट आई कैन टेल यू कंपोजिशन ऑफ बायोटाइट। तो उसकी इच्छा होगी तो पूछ लेगा, नहीं होगी तो, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के कुछ अगर शंकाएं हो तो ज्यादा आई कैन आंसर, अदरवाइज इट बिकम्स ए मोनोलॉग, जो कि इंटरव्यू में हमेशा होता है। या कुछ आप कुछ बात, कुछ स्पेसिफिक बात कुछ। सर इसमें कुछ जियो फिजिक्स और जियोलॉजी दोनों ही ऐड है सर इसमें, जियो फिजिक्स हाँ और तो हाँ तो ये तो मतलब इंटरव्यू की तैयारी में जनरल तैयारी करनी पड़ेगी। जियो फिजिक्स वाले को अपने हिसाब से करनी पड़ेगी और जियोलॉजी वाले को अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। जियो फिजिक्स का क्या रोल है, जियो फिजिक्स का क्या रोल है, और जियो फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और आप somebody raised a question, I think, about, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अगर किसी कुछ पूछना हो तो। ओके सर। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अक्सर जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े हैं उसका जियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। उसमें कोई ऐसे आप जिस इंस्टीट्यूशन से आप आ रहे हैं उसमें कोई ऐसे लोग जो आपके एलुमनाई हैं, जिनका इंडिया में या भारत में या भारत के बाहर कहीं जियोलॉजी में कोई इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, उनके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। आप जिस एरिया से आते हैं वहाँ की जियोलॉजी के बारे में एक अक्सर जो शुरुआत होती है इंटरव्यू की, वो वहाँ से हो जाती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ की जियोलॉजी क्या है। तो वहाँ की जियोलॉजी के बारे में जानकारी होना, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं उनको हम पास नहीं कर सकते, उनके लिए कह सकते सॉरी सर आई डोंट नो। सवाल पूछिए कि व्हाट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी, इन दिस यू कैंट से सॉरी सर आई डोंट नो। आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटिग्राफिक फॉर्मेशन या यूनिट की एज या उसकी लिथोलॉजी के बारे में कह सकते हैं सर आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें तो वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट कॉन्सेप्चुअल पार्ट, द फंडामेंटल्स शुड बी वेरी क्लियर। सो एनीथिंग एल्स? Sir, yes. हाँ, एक करके बोले। Paras, any question from your side? You can ask. Yes, sir. Good evening. Yes. Sir, actually, I have a question that some of the students for the geophysics course are actually from physics background, and they don't have a groundwork experience for the subject. So, does it matter for the job case, as you mentioned that we could give some experience in that respect, but we physicists don't have any kind of groundwork experience in that case. So, how does that going to affect our interview? One thing is very clear, that your role in the organization, you must be very clear. Whether you how much experience of geology you have, that's not important, but how much you know about your subject is very important. And how geophysics is important in Geological Survey of India, and what is the role of geophysicist in Geological Survey of India? Because you can say, if I get a job, my job would be basically related to geophysics. There are specialized people dealing with geology, but I understand the application of geophysics in solving geological problems. Because
we are dealing with geology is a study of material, which are rocks and minerals, and we are dealing with physical property. I have an expertise in interpreting and understanding the physical properties of these material and rocks, and then I can give my interpretation, and the geologist will interpret in a geological sense. For example, if you're talking about the gravity, so if you take a gravity profile and I identified gravity anomalies, I can pinpoint these are the gravity anomaly areas. Now the geologist will take over and will work on that. What is the cause? What could be possible cause? Whether there's a mineral deposit or something else. So I don't need to be an expert in geology, but I do need to have the basic understanding of geology, and that I have. Oh, yes. Yes. Thank you, sir, for explaining in detail. Okay, thank you, Paras, for asking question. Alisa, any question from your side? You can Yes, ask. sir. Good evening, sir. Am I audible? Yeah, you're audible. Please go ahead. Sir, I have actually two questions. The number one is we have done field work during our masters as well as during our bachelors. So, what sort Yeah. of questions are being asked from those areas? Number one. And number two is what sort of questions are being asked from mapping skills and all, like the Okay. basics of mapping. Yes. Actually, there are two things. Let me focus on the first question. That going to the field and the field work is an integral part of our curricula in all the universities in India. You have this geological field work is always there as a one important component of the syllabus. And in many of the universities, it is compulsory that you cannot appear in the exam unless you attend this field training. This is one aspect. The second aspect is the way they are conducted. So I don't want to generalize, of course, but I understand because I've also conducted a lot of these tours and field work. The involvement of students is variable, and sometimes some of the students who are not very keen, they miss certain things. And as a student, when you go to the field, depending upon your background, sometimes what happens is that your field work is immediately after your enrollment. So you don't know much of the theoretical part, and you go to the field. And in many cases, and especially in graduation, it becomes a more like this excursion than the real field trip. So that part is gone. Now you are all masters. You have completed your master's degrees. Now you should go back theoretically. Of course, you cannot go physically. You now go back and sit down and recall all those moments or whatever you still have memories, and then take your books, because you must be very clear about whatever you have seen. And definitely important बात ये है कि जो चीज आपने देखी है, चाहे कैजुअली देखी है या बहुत सीरियसली नहीं देखी है, उसके बारे में जब आप आज की तारीख में जब आप मास्टर्स कर चुके हैं, जब उसके बारे में आप अगर if you relook at that particular your this your approach will be different. You can explain and understand much better. So you must go refer to the books and see what is the geological significance of that area and what you have seen. So this is very important. उस टाइम जो चीजें छूट गई थी वो आपको आज डेफिनेटली वो करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आप फील्ड में गए हैं and you have to say yes, and what did you see there, what is the importance of that rock. So all these things must be there. So I think I have and what was the second question? I'm sorry, I missed that. Sir, the second question was what kind of questions are being asked from mapping skills and all? Like, what do we know about Mapping mapping? skills, yes. Mapping, you may be asked that what is the role of geologist in GSI? So one important role, when you mention that geological mapping, then the question may follow that how much you know about geological mapping? But they're not very keen that you know geological mapping. They just want to know that you know the basics of geological mapping, that you can handle a planometer compass, you can read a map,
You can devise a traverse, but it's not important that you know the mapping or not, because they have a special training for mapping. So they only want to know that whether you are suitable to be trained for geological mapping. So don't worry on that account. That you can say that in fieldwork we did some mapping, or we did some traverse mapping, or we just marked the contacts between these. So that's so they're not looking for people who can straight away go to the field and start mapping. But you must but the fundamentals of mapping, fundamentals of a geological map, what can be interpreted in a geological map, what are the features of geological map, what are the color codes, what are these the schemes used, standard, that you should be very that you must know how these contours and can be related to geological features. So So Okay, thank you sir. very much. Thank you very much. Detailed Okay. and easy explanation. Yeah, Nidhi. गुड इवनिंग सर। सर मेरा Yes, सवाल Nidhi. ये है कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं तो जो हमारा लैंग्वेज है हम इंग्लिश में दें या फिर हिंदी में या फिर मिक्स वहाँ चल जाता है, बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट वो रहेगा जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन जो भी आप लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है आज की तारीख में, और लैंग्वेज के आधार पर आपको वो नहीं कर सकते, रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यूपीएससी की, तो ये ऑल इंडिया जॉब है, और जो हमारा साइंस का सब्जेक्ट है एमएससी जियोलॉजी या एमएससी जियोफिजिक्स, जो भी हमारी डिग्री है, इसमें हमारा आमतौर पर हमारा जो मीडियम इंस्ट्रक्शन होता है वो इंग्लिश होता है। और वहाँ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि हिंदी नहीं जानते, क्योंकि ये एक्सपर्ट जो हैं वो पूरे इंडिया से आते हैं। पर लैंग्वेज डेफिनेटली इज नॉट अ बैरियर। देयर आर पीपल हु डेफिनेटली अंडरस्टैंड हिंदी, और अगर आप हिंदी में बोलते हैं और हिंदी में आप कंफर्टेबल हैं तो यू कैन स्पीक इन हिंदी, बट whatever you are talking should be very clear and scientific, to the point, और पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस। कई बार कोई चीज पूछी जाती है तो उसकी हमको उसकी जो डेफिनेशन है वो नहीं रटी हुई डेफिनेशन, ऐसे नहीं लगेगा कि रटी हुई डेफिनेशन बोल दी वापस, बल्कि यह है कि मुझे आपको उस बात को समझाना है उन्हें। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं उसमें आजकल। और उसका बोर्ड का जो मेन पर्पस है वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स को देखने का नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देखने का है, और आपके अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की आप किस तरह से कन्वे करते हैं। जी सर। Thank सर मेरा you. एक और सवाल है। Yeah, जी? Nidhi, continue. या हाँ, यस बोलिए। सर दूसरा सवाल है कि अगर बोर्ड हमें बोलता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो डालना सही रहेगा सर? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नॉर्मली बोर्ड नहीं बोलता। बोर्ड आपसे बोल सकता है कि जस्ट टेल अबाउट योर पॉजिटिव पॉइंट्स, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो बोर्ड ही करेगा। एक सेकंड होल्ड करना जरा। ओके सर। देखिए कॉफी दे देने। सॉरी, देयर वाज अ डिस्टरबेंस। हाँ, सो नॉर्मली क्या होता है, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जब आप एंटर होते हैं तो जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं कैंडिडेट को बाकी लोगों से। तो आपसे अगर आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए अब मान लो ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़े, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और आपके क्वालिफिकेशंस बताइए। और मेरे ख्याल से वहाँ के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है, बहुत ज्यादा चीजें बताने का मतलब नहीं है। ओके सर। और अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं कि जेआरएफ हैं या कहीं पर किसी पोजीशन में हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं इस वक्त आई एम वर्किंग एज जेआरएफ इन दिस। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ आयुष जैन, आप बताएं कुछ, पूछो कुछ सर से, हैंड रेज किया आपने। Sir, as per the syllabus of our university, the dissertation that was not mandatory, and since it was a COVID batch, so I preferred not to do that because I cleared my prelims and then it was last semester that
we went there. So 3 semester were online only. So is that going to impact our interview? Because I had not done any project, that dissertation kind of thing. I did the field work, but not the dissertation. It was not mandatory because. Dissertation does help in a way when you go for an interview and you have a dissertation with you. So normally there will be some questions definitely related to the dissertation. So the topic, but it is plus and minus also. In the sense, if you don't have, if you did not go for dissertation, it's not going to make any negative impact. But if you've done some dissertation, it has it gives an advantage to the candidate in the sense that some of the discussion would be on the dissertation and the topic, and that's the area where you are comfortable because you have done work on that particular topic. So you should be comfortable talking about your work, but at the same time, it is expected that you can communicate your understanding of your topic. What is the significance of your topic? What was your approach? And what are your findings and what are your results? So sometimes it can, if you are not able to clearly convey, it may be a little negative. But if you're not done any dissertation, it does not make a difference. In that case, of course, the interview will go like a normal interview. The experts have freedom to ask you whatever they want. So it does not make any negative impact. If you don't have dissertation, if the dissertation was optional in your curriculum and you did not go for it, it's okay, fine. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you, Ayushi. Amit Vikram, any question you can ask? यस सर, मेरा एक सवाल था कि एक जनरल परसेप्शन रहता है कि इंटरव्यू में अगर आपने पहले 3 या 4 आंसर जैसे गलत दे दिए हो तो इंटरव्यू बोर्ड वोंट बी मच इम्प्रेस्ड और मतलब आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जो इंटरव्यू बोर्ड के का जो प्रयास रहता है वो रहता है कि आपसे आपकी जो नॉलेज है उसको इवेल्युएट करना, और वो नॉलेज इवेल्यूशन तभी हो सकता है जब आपसे वो चीज पूछी जाए जो आप जानते हैं. यू कैन से इट काइंड ऑफ इट्स जस्ट कोइंसिडेंस और बैड लक कि आपसे पहले तीन सवाल जो पूछे गए वो तीनों सवाल ऐसे थे जिसका आपको जवाब नहीं आता. तो नेचुरली उसके बाद भी अगर 2 सवाल और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ है. लेकिन अगर आप चौथे सवाल का जवाब देते हैं और उस सवाल का जवाब कॉन्फिडेंस से और पूरी अंडरस्टैंडिंग से देते हैं, तो जो शुरू के 3 सवाल का जवाब नहीं दिया था उसका असर थोड़ा कम हो जाता है, और अगले 2-3 सवाल अगर आपने जवाब दे दिए तो फिर वो ये काउंट नहीं होता कि आपने 6 में से. कई बार हम लोग ये भी असेसमेंट अक्सर बात होती है कैंडिडेट्स की, सर मैंने तो मेरा बड़ा अच्छा इंटरव्यू गया था, मैंने 5 सवाल में से 4 का जवाब दिया. सवाल जवाब देने की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं है. दे आर, एज आई सेड अर्लियर, कि आप जो चीज जानते हैं वो कितनी अच्छी तरह जानते हैं, वो इम्पोर्टेंट बात है, और ये चीज करनी होना जरूरी है. तो अगर आपके शुरू के 2-3 सवाल का जवाब नहीं मिला और बाद का आपने दे दिया तो पुरानी बात को वो याद नहीं रहती, मतलब उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है. ओके सर, मतलब सर जैसे अगर किसी ऐसे फील्ड से शुरुआत की जाए जिसके बारे में मतलब हम कम कॉन्फिडेंट है और मान लीजिए उसी पे वो सवाल पूछे जा रहे हैं और डीप जाके, तो क्या हमारे द्वारा ये कहना सही होता है कि सॉरी सर इस फील्ड के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप चाहे तो मतलब फिर उसमें हम अपनी तरफ से 2 या 3 फील्ड सजेस्ट करते हैं? ये बहुत जरूरी है कि जैसे आपसे आपसे पूछा गया, आपके स्ट्रेटिग्राफी पे सवाल, पैलेंटोलॉजी पूछा, लेकिन उसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ बेसिक फील्ड्स हैं और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसमें हम नहीं कर सकते. कोई स्पेसिफिक जैसे कई स्टूडेंट्स को पैलेंटोलॉजी में प्रॉब्लम आती है, तो किसी खास जनरा के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन पूछ लिया, अगर वो एक्सपर्ट पैलेंटोलॉजी के उन्होंने पूछ लिया और आपको उसका आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, तो आप कह सकते हैं सर पैलेंटोलॉजी में थोड़ा सा मुझे भूल गया, मैं काफी टाइम पढ़ा तो था, लेकिन आप मुझसे इस सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं, इस टॉपिक पर पूछ सकते हैं. तो यह अगर सजेशन देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप सब चीज जानते हैं ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, पर आप जो जानते हैं वो कितना जानते हैं वो इम्पोर्टेंट. ओके सर, थैंक यू. ओके, थैंक यू और सर. जो अगर आप जवाब नहीं आता तो आप कहें कि सर सॉरी आई डोंट नो दिस,
Yeah, thank you, sir. Yeah, Parth, you can ask question. Good evening, sir. Yeah. Sir, I want to ask you, sir, what are the main subjects, sir, for the interview? Like there are so many subjects, sir, almost 13 to 14 in geology. So what are the major subjects for the, especially for the GSI interview, sir? You can't say because if there are 13 subjects and you have studied 13 subjects, they are important. That's why they're in the syllabus. Number one. Okay, sir. Number two, the problem is that depends upon the person. Expert is from remote sensing. So you can expect questions on remote sensing. The expert is from paleontology. So you can expect questions on paleontology. But the fundamentals you must know. So there's nothing like these are important subjects and these are not less important. It's just who's sitting on the other side. And because everything is important. So this is very difficult to say that these 5 or 6 major themes are important. But there are some fundamental components of geology that you cannot say. Sorry, I don't know petrology. Yeah, I don't know mineralogy. So I don't know. I'm not comfortable with structural geology because structural geology, stratigraphy, mineralogy, petrology. These are basic subjects. But it's your skill that you have to shift this entire interview towards on the topic that you are comfortable with. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Parth. Shivam, you can ask your question, please. Okay. Sir, how to deal with question, particularly controversial research-oriented problems? In that case, you have to be your answer should be kind of realistic, because you are not in position to, if there's a controversial topic, say there are some 2 or 3 opinions about something, so you cannot say, or in that case there are 2 things. The safe way is that there are 3 different groups or different opinions about this. This is one opinion based on this data, this is another based on this interpretation, this is based on this interpretation. So these are but majority of the people they follow this, but these 2 are also there. Or if you are confident, then you can say, in my opinion, this is the better option, better interpretation, because then you must be able to justify your answer. But to be safe, you can just say that there are 3 schools of thought, and there are three different interpretations or 3 different explanations for this phenomena. And these are the basis of these 3 different theories. That shows your understanding, that you read the literature. You're not just focused only on one thing. So there only this thing is enough, that you have read, you're aware of all the concepts. Thank you, sir. Thank you for this nice explanation. Arpita, you can ask your question. Okay. विकास आप सोबित भट्टाचार्य. सर एम आई ऑडिबल? Yes, you're audible. Please go ahead. सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे इंटरव्यूअर कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं, डू यू वांट टू आंसर एनीथिंग एल्स और दिस मच इज सफिशिएंट, तो सर व्हाट शुड वी से? नहीं, they may ask you if you want to say anything else about yourself. So you can say कोई ऐसी खास बात जो अगर तुम बता सकते हो अपने बारे में, जो तुम्हारे को वहां पे सपोर्ट करती है, तो बता सकते हो कि I am interested in this adventure, and so this will help. This will be this background will help me in the geological fieldwork, which is very important part of GSI. Or your hobbies, which can help you, like, or you have written something. So you're a keen observer. You are a nature lover. इस सब चीजें बता सकते हैं अपने बारे में, लेकिन you have to be very specific. Sometimes कई बार लोग लिख देते हैं, हॉबीज में लिख दिया रीडिंग बुक्स,
और इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आपने लास्ट बुक कब पढ़ी थी, तो आप कहते हैं 3 साल पहले. So, but if you have anything, and this is showcasing your suitability. If you can say anything that helps your candidature, you must say it. But it should be it should be on it should be clear, honest. Okay. Thank you. सवाल के बारे में सवाल आप नहीं बता सवाल आप सजेस्ट नहीं कर सकते, आप अपने बारे में बता सकते हैं. कभी ये नहीं पूछा जाए कि हम और सवाल पूछेंगे आपसे, और क्या सवाल पूछा जाए. आपसे पूछा क्या कहा जा सकता है कि आप कुछ और अपने बारे में कुछ और बताएं कि आपको क्यों लिया जाए इस जॉब के लिए. थैंक यू सर. Thank you, sir. लास्ट ये सोभित भट्टाचार्य है, आप पूछिए. Yes, hello, sir. Good evening. Yes. And my question is like, as you have said, the earlier questions, like the initial questions, are out of the topic. They generally ask, and like which topics we may cover, like the general awareness or the like international relations or like that. If you would give some idea about it. Yes, this will be something related to your subject. Like if there is some, for example, if there's something has happened, some disaster has happened, some hurricane has happened, so you may then it may the board may ask you, okay, is it related to what is the geological phenomena that is operating, or is there any geological relationship with the of this phenomena? Then you can have to, there you have to explain that it could be related to global warming, and how global warming and geology can be. Is there any connection, or is there any how geological can be used in understanding or improving or reversing this global warming trend? What is it? How do you understand how climate change and geology? What is the relationship? What are the national activities, scientific activities taken up? You may be asked about, like we all know the petroleum and all other energy sources are related to geology. So you may be asked about non-renewable geological energy resources, geothermal and energy, and any geological event that has happened in last few days. You may be asked. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. आप सभी के डाउट सोल्व हो गए होंगे, मतलब कि सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया आपको. हाँ, तो रिया गुप्ता आप कुछ पूछ सकते हैं. हाँ, पूछिए. हैंड रेज किया आपने. Hello, sir. Good evening, sir. हाँ. Sir, am I audible? Yes. Please go ahead. मेरा question, sir, मेरा question. वेट रिया गुप्ता, मतलब कि आपकी आवाज सही नहीं आ रही, वापस बोलिए. हाँ, बोलिए. सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जियोफिजिसिस्ट के लिए काफी स्टूडेंट फिजिक्स बैकग्राउंड से है, तो पैनल में हमसे जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं या ओनली जियोफिजिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे? क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो आपका जो आपका वो है, जो आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है. तो अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपसे क्वेश्चन फिजिक्स की पूछेंगे, लेकिन आप चूंकि आप एप्लीकेंट यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे के लिए हैं, तो आप तो ये जरूर पूछा जाएगा कि आपको ये जरूर अपनी अंडरस्टैंडिंग बतानी पड़ेगी कि आपकी जो नॉलेज है वो जियोलॉजिकल सर्वे में कैसे यूज होगी और आप उसमें कैसे यूजफुल है. सो अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी एक और किन्हीं का आंसर करते हुए कि आई अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ मटेरियल and I can provide interpretation, and this interpretation can be used by the geologist. I will sit with the geologist and we'll interpret this in terms of the rocks. So as geophysicist का जो रोल है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है. अभी ग्रेविटी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकता है, या रेडियोएक्टिविटी हो सकती है, geomagnetism हो सकता है. So these are the physical properties of rocks and minerals. So
I understand the physics of this, and the geologist understands the material that is being affected, and we have to sit together and provide a model. So my role would be to provide the interpretation of geophysical these data. Okay. But geological interpretation is done by the geologist. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Vikas. हेलो Yes. Yes, Vikas, बोलिए. प्रणाम सर. सर मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर कोई कैंडिडेट, जैसे मैंने अभी इसी साल पीएचडी ज्वाइन कर लिया है, तो मेरे से क्या क्वेश्चंस एक्स्ट्रा या अलग पूछे जा सकते हैं एक नॉर्मल कैंडिडेट जो पीएचडी नहीं ज्वाइन किया है? आपने क्या ज्वाइन किया है? पीएचडी ज्वाइन कर लिया है अभी मैंने. जब आप तो ये निश्चित रूप से आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, और उसके बारे में आपकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका रोल क्या है, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है, और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और उसके अलावा ये पूछा कि आप जो कर रहे हैं वो जियोलॉजी से क्या, उसका क्या जियोलॉजी क्या रिलेशनशिप हो सकता है या है, और ये जो आपका नॉलेज है, ये जो बैकग्राउंड है, आपका जो एक्सपीरियंस है, ये जीएसआई में किस तरह से यूजफुल हो सकता है. तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा. अगर जब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने कहा कि मैं 2 साल से, 2 महीने से या 6 महीने से इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस पोजीशन में काम कर रहा हूँ. तो आपसे पूछा कि आपके दायित्व क्या है यहाँ पे, आप क्या, तो आप बता सकते हैं कि मैं टीम का पार्ट हूँ या टीम लीडर हूँ, और मेरी जिम्मेदारी, हमारी पूरी टीम का काम ये है, उसमें मेरा रोल उसमें ये है. और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या काम कर रहे हैं. तो ये एक एडवांटेज सिचुएशन है, क्योंकि आपकी शुरुआत जो है वो उससे होती है जिसमें जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं जवाब देने में, लेकिन आपको उसका बैकग्राउंड पूरा आना चाहिए, थ्योरेटिकल और जो आप जो कर रहे हैं दोनों का. ओके, थैंक यू सर. दीपांक श्रीवास्तव एड्रेस किया आपने. गुड इवनिंग सर. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Please go ahead. Sir, suppose, sir, if I am asked any question, so if I am unable to answer the question instantly, so will it be okay to say that may I take few seconds to answer this? Yes, you can. It will make a good impact. That you're not just throwing out the answer. You're trying to understand the question and trying to answer it. Sometimes you can take a sheet. They provide you a paper. You can ask for, can I have paper and pen? So they give you, and you can also jot down and then find your answer. Or sometimes something is asked. Sometimes they can ask you how much lead is present in 1 kilogram of lead sulfide, or in 1 kilogram of galena. So you can say, so can I use a pen and pencil? So you can calculate and find out, or you can just give a formula. So you can take your time, because you don't have to say that please give me time. You can ask for a paper and pen. You can jot down something if you want, and can answer. But of course, the time should not be. You cannot take 5 minutes, because it should be little. You can take a pause and think about it and then answer. It's perfectly fine and acceptable. Okay, thank you, sir. Yes, Ayush Jan. Sir, many a times this happens to me, that if suddenly a question is being asked, then instantly I'm not able to recall the answer. But after 2 to 3 minutes, if 2-3 question passes, and then we suddenly get to recall that answer to that question would be this. So if such kind of situation happens, so can we answer a question which was asked some questions before, and later, before leaving the room, that once they say that your interview is over, then can we answer the question which was asked earlier and we were not able to answer? Not Or after, we should just skip it? not after the board says that your interview is over, you may go. But the moment you realize that you know the answer, but you are in the middle of some other question that time, because
a lot of things are going simultaneously. You are already on the question number 3 when you realize that you know the answer of question number 1. So once you finish the answer of question number 3, then you can raise your hand and say, "Excuse me, may I please allow me to say something?" Then you can say that you are, and especially you can looking at the person who had asked that question originally. So I'm sorry I could not answer that time, but this is the answer of that question. So, but once the interview is over, then it's formally over. Then it's not no point in saying that the answer of the first question, and there should not be much gap between, because sometimes even the interviewer will forget what question he asked at the end of the interview. So it's better the moment you realize it should be within 2 or 3 questions, you can go back. Don't have to Okay, wait sir. for the last, because they try to make you comfortable, and so they're not. If you want to say something, they allow you. Okay, sir. ओके, थैंक यू सर। Okay. ओके सर, मतलब कि सबके जो भी क्वेश्चन थे वो सब आपसे पूछ ले सर, सेटिस्फाई हो गए सभी। ओके सर, Thank you, Jitesh. It was थैंक यू nice सर। interacting with all the youngsters, and my best wishes and good luck, everybody. ओके सर, बाकी सर ठीक है सर। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सर। Nice explanation. ओके ओके Okay. Good night. And if there's anything, you can individually contact me. No issues. Thank you, sir. Okay. Then. Okay. Thank you and good night. थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay. Bye. Thank you, sir. Good night, sir. Hi, Mohit. Hi, Akash. Mohit, can we have the recording for this यस session? यस यस, कैसा लगा आप सभी को? Yeah, it was amazing. Thank you, ओके Jitesh. ओके ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, डार्सी क्लास में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. ओके ओके ओके, ठीक है फ्रेंड्स हैं, Thank you. गुड नाइट। हेलो मोहित, Yeah, Sudeep. मुझे पूछना था कि जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम है जो है, Yeah. तुम एक बुक बता रहे थे फॉलो करने के लिए करंट अफेयर्स के लिए, तो विच बुक शुड आई फॉलो? करंट अफेयर के लिए आप कोई मैगजीन फॉलो कर लो। प्रवीण कहाँ चला गया? मूमल की मैगजीन, क्रोनोलॉजी या फिर उत्कर्ष क्लासेस की मैगजीन जो भी। अच्छा अच्छा, ओके। और एंड अच्छा, जो एक पार्ट जो जीएस में पार्ट है टीचिंग रिसर्च वगैरह का, ये सब, हेलो, उसके लिए आप केवीएस मदान की एक बुक आती है, स्टैंडर्ड बुक फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, यू कैन फॉलो दैट। अच्छा अच्छा, केवीएस मदान।
Hello.